Hello, everybody. Ishita Mukherjee here. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Is that And Shubhasri, ma'am? yes, I'm Subhashri, and welcome to today's meeting. We will be waiting till 4 o'clock for allowing all the participants to join. We Right. have time till then. Okay, fine. I'll just mute myself and just set up the thing. Doing a webinar after a long time because now again, thankfully, we are back to offline mode. So I'm just setting up my stuff. Okay, ma'am, no issue. Thank you so Okay, thank much. you. Thank you. A very good evening to all our participants for today's program. And I welcome our eminent resource person for today, Madam Ishita, for the training. And today her topic is the art of questioning, which is very, very important for all the teachers, especially maths teachers, because her subject is related to maths. And
Let us see how the latest trends or change in the CBSE is being taken care of by the teacher with the help of the resource person for today. Over to you, ma'am. Thank you so much. Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am, it is visible. Okay, that's great. I have just seemed to have lost the chat button. So, may I just know how many people are there? Oh, it's right up there, and I'm not being able to drag it down. Okay. Ma'am, So, there are nearly 2,700. 2,700. Okay. That's a Yes, ma'am. scary number. All right. Because in that case, I will not, I'd rather have everybody on mute and Yes. write on the chat box. So I will try and answer as many, questions I can carry on, get to within this. We have just 1 hour's time. So let us begin today without any more ado, so to say. So as you can see, just give me a second. I'm trying to get the chat box down. There it is. And here, this will solve my problem. So just give me a second. Yes, got you. So now this gives me a chance to read everybody's comments. And please, I'll be very happy because since you'll be all on mute, if you could just write down your thoughts or questions that I'll be asking, if you answer them on the chat box, don't bother about spelling, and punctuation and all that. It is absolutely not necessary. Just make sure that, I can understand what it is that you are trying to say. All right. So as you can see that the topic is today about questioning. Can anybody tell me, does questioning matter? I mean, in not just mathematics, for learning, is questioning important? Should the students be questioned? Should students be asking questions? You can just, okay, I can see yes, one or two, all right. Yeah, lots of yeses here. Okay, fine. I'm glad to see a lot of that students should be answering questions. Now, the point is, and we are all teachers here, nearly 3,000, as Shubhasri ma'am said. I guess we can be honest and say that actually, if you think back, very few students really ask questions, and especially in mathematics. One, of course, is the mathematics phobia, like thing, and then they have, what if my question is wrong, or somebody has already, there are various other issues also. But the point is, student questioning is quite less. I mean, again, my next question now, please answer this question. Do you think when you teach in your class, you get as many questions as you would like, expect from your students? Or you have to keep on asking them that, do you have any questions? Do you have any questions? Do you have to keep on asking that? Okay, fine. That not as many questions, most of them, what I can see at. The reason is, in our method, especially, the traditional method, because Shubhasri ma'am used the word innovative, the modern thing. In our traditional method, we always looked at the recipient, that they would follow blindly or accept everything what the teacher says. All right. So it was asking questions was, I'm sorry to say, but in a way was kind of disobedience. Okay, that can it be done this way? I know of teachers who, if you did in a different method, if you solved in a different way, would actually get quite bothered. I hope nobody else has come across some teacher, but I think
you might have come across such teachers. Has anybody? कि आपने किसी और मेथड से किया and something and the teacher was not very happy. Has anybody had that kind of experience? Okay, I can see one. Yes, yes, आने शुरू हो गए, right? Okay, but if you look at what it says, that what does questioning do? Questioning actually brings insight, which brings curiosity and which cultivates wisdom. Because when you are curious, you will ask question, and who should start this? It should come from the teachers. You know, as teachers, we are always very ready to answer, tell them everything. Before they can even ask a question, we have already given the answer. Since again, you're all maths teachers, I have a question for you. You may see your students, 6 to 8, especially say 9 to 12, solving things like algebra problems on their own, maybe some of trigonometry or calculus. How many of you see, and this is especially in ninth and 10th, how many do you see solving geometry questions on their own? Anybody? ज्योमेट्री के राइडर्स कितने बच्चे अपने आप सॉल्व करते हैं कि सॉल्व करके देखें? I could see 40%, 50%, very few. Right. You know, the numbers are very, if half the class is not doing it, in that case, well, obviously, there is a problem. So, why is it a problem? It is a problem because and I can very honestly say from even my own school days, it was something like, अरे ये तो teacher, करवा देगी board में. And then वो सारा लिख लिया in your notebook or register, whatever it is, and उधर से रट के आ जाना है for geometry. All right, that geometry also has to be solved, because if you do not ask those questions, if you do not solve something yourself, you can never understand anything. So going ahead, we have today the art of effective questioning. What does it mean actually? Why is it an art? Why have we named it an art? That the right questions in classrooms help understand what our pupils are saying. One second, again, this thing is really bothering me, so I'm trying to get rid of this. I don't know why this is coming up here. Can't close it. All right, I think that should do. Okay. All right. So asking the right question in primary maths classroom, I mean, this is not just primary, for any kind of classroom, helps us understand what our pupils know, don't know, need to know. So it allows us to identify learners who are struggling with, particular concepts, and those with more advanced learning skills. In this thing, one thing again I've seen, do you think questioning also is a kind of formative assessment? Would you agree with that statement? Okay, I can see Moshmi ma'am saying yes. There are lots of other yes. Formative assessment, we think any kind of assessment is like paper hona chahiye, pen, and especially I'm talking about maths, usme right, wrong. No. Assessment for learning stands for that when you are assessing for learning yourself as a teacher, are my students able to follow what I'm saying? What do I need to change? What should I explain this in another way? All these things are very, very important. And asking questions is one of the quickest way to do it. All right, because by the time you have a test or a quiz or something, it may take
time, you might have already gone ahead a bit. Therefore, it is so important to question. Now we come to what is the important part of this session is the various kind of questions that we ask in a classroom. So we are going to, discuss different kinds of questions. So here the first one is open-ended question. What are open-ended questions? They encourage critical thinking and allow for multiple possible answers. It is not bound by one answer. It may not have one specific answer, but you have to explain. Please concentrate on this term explain. Why am I asking this? How many of you feel that when it comes to comprehension and communication, and especially again in mathematics, our children lag behind? Biggest problem is when uh, uh, they are doing word problems. If you give them a direct question to solve these quadratic equation, kar denge. You give them a word problem of the same question, they get stuck. Do you agree with that? That children have a problem with word? Yes. So therefore, yahi baat hai, we have to understand that we need to make them talk. Let them explain their views. जब वो बोलना सीखेंगे, चाहे वो verbally ही बोल रहे हो, हमें पता चलेगा कि ये बच्चा कुछ गलत तो नहीं समझ रहा है. Okay? So, let's look at some example of open-ended question. लीजिए. आपके सामने ये है which one doesn't belong. There are 4 numbers in front of you. 36, 64, 49, 81. Okay? Now you tell me आपके इसमें आपको कौन सा लगता है कि which one doesn't belong, और शॉर्ट में लिख दीजिए. जैसे 64 लिखा है दीप्ति मैम ने, why? जस्ट उसका लोग मुझे 64 लिख रहे हैं, प्लीज राइट द रीजन. छोटा सा कि दिस इज द रीजन. सारे लोग 64 बोल रहे हैं. आई वुड रियली लव टू नो द रीजन. किसी ने 49 भी बोला. अच्छा ठीक है. Not divisible by 9, but okay, 49 is not divisible by 9. No, but even 64 is not divisible. 36, 49, 81, 49. अच्छा चलिए, एक सेकेंड. स्टॉप ऑल ऑफ यू. लेट मी सी मैं क्या क्या आंसर दे सके. इनफैक्ट मैं आपको दिखाती हूँ. अब बच्चों ने ये वाले आंसर्स दिए. किसी ने कहा 27, किसी ने कहा 64, किसी ने कहा 16. आई एम सॉरी, ये वाला 49 नहीं होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था, बट दीज आर द वेरियस आंसर्स. ओके, अब क्यों? अब रीजंस आप देखिए बच्चों ने क्या क्या दिए. जब आपके नंबर्स ये वाले हैं तो इसमें भी हम वो कर सकते हैं. ऑल राइट, व्हेन यू हैव दिस नंबर, किसी बच्चे ने बोला 27. क्यों बोला? स्टूडेंट thinks 27 doesn't belong because it is the only value which is odd. बाकी सारे. किसी ने बोला 64. 64 because all other numbers are perfect square or perfect cube, but 64 is both. किसका ये रीजन है? कोई है इधर? आप लोग जो 64 लिख रहे हो, okay, I can see this is Shruti ma'am saying yes. All right, great. And किसी ने बोला 16 because it is not a perfect cube, and the other 3 are. All right, that 27, 8. तो इधर अगर हम देखें, that I can say that all these 3, 6 and 8, 1, it's 81 is actually a 4th degree, है ना? 36 is a square. 36 is a square.
49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर ये क्यूब, और ये जाके ये है आपका स्क्वायर, and also it is to the power 4. All right. So therefore, this is a discussion. This is an open question. जिसमें it can, like we are discussing. आप सोचिए अगर हम लोग आमने सामने होते, कितना हमारा एकदम ये explanations होता, discussions होता. So these are very good starters to get children talking and thinking about mathematics. Like अगर आप square roots and cube roots, squares and cubes पढ़ा रहे हैं, this kind of question is something which is very important. All right, let's go on to another one. The more open the questions, the more pupils will reflect, and the more confident they will be to talk to you about what they know. How many ways you can show me your thinking? Okay. It is so much easier than, better than saying that you know करके दिखाओ. ओके, वर्बली एक्सप्लेन में बहुत बच्चे ओरली बोल सकते हैं पर लिख नहीं सकते, पर आपको पता चल जाएगा दैट वेदर द चाइल्ड्स थिंकिंग इज करेक्ट और नॉट. सो लेट्स लुक एट समथिंग लाइक दिस, अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल. हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो मैं आपको बोल रही हूं, मैं आपको आंसर बता रही हूं, द आंसर इज 1. अब आप इस पे क्वेश्चन बनाइए, क्या क्वेश्चन हो सकता है? द आंसर 1 होना चाहिए. प्लीज राइट इट इन योर चैट बॉक्स. ओके, 3 minus 2, 2 minus 1, square root of 1. Very good. आगे. थोड़ा आगे सोचिए, इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन. कैन आई से इट इज sin square theta, tan square theta into cot square theta? Can I say it is tan square 40, tan 45 degree, correct? All right, okay. Can I say it is x to the power 0? I saw sine 90. Yeah, right. Tan 45, 12 divided by 12. All right, okay. Very good. So do you realize, okay, if we have a square of unit 1, उसका area कितना होगा? 1. All right. So do you see that if you ask similar kind of questions, then आपको, आप कुछ भी आप ऐसे question बोल सकते हैं. The answer is 1. अभी आपको questions बनाने हैं. हर बच्चा एक क्वेश्चन बनाएगा जिसका आंसर 1 होगा, बट टॉपिक होगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, या टॉपिक होगा क्यूब एंड क्यूब रूट्स. ओके. So therefore, this is something that you can always try out. These are what we call as open question. So here I have a question for you. इसके लिए आपको थोड़ा पेपर पेंसिल चाहिए होगा. ओके. एक एरिया है जिसका शेप इज, शेप का एरिया इज 462 स्क्वायर यूनिट. आप इसको कौन सा शेप या क्या कहना ये करेंगे? मतलब क्या क्या बना सकते हैं? मान लीजिए, क्या ये एक स्क्वायर हो सकता है? कैन 462 हैव अ स्क्वायर शेप? करेक्ट, इट कैनॉट बी बिकॉज नो स्क्वायर एंड्स इन 2. ये हम एकदम शुरुआत में पढ़ाते हैं. तो कोई मुझे कुछ बता सकता है? ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा. हाँ, ठीक. कोई लिख रहे ट्राइंगल. बताइए ट्राइंगल का डायमेंशन क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायमेंशन बताइए. रेक्टेंगल का क्या लेंथ और ब्रेड्थ हो सकता है? 6 into 77. लवली. दिस इज रोशन सर. ओके, रोशन सर, वंडरफुल. और कोई?
एक रेक्टेंगल रोशन सर ने बना दिया 22 इंटू 21। ओके, वेरी गुड। पेंटागन पर मुझे डायमेंशंस चाहिए। अच्छा देखिए, मैंने जानबूझ के ये वाला नंबर लिया था। आपको ये 7 और 11 इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं? क्या ये किसी टाइप के सर्कल का हो सकता है? ये देखिए, एक 154 वाला बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ज्योति मैम ने लिखा है 154 इंटू 3, मतलब 154 अगर एरिया है तो इसका रेडियस कितना आएगा? करके देखिए, फटाफट निकल आएगा। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर कितना आया? 7 आया। और उसका ये 3 गुना है, 154 इंटू 3 लिखा था। तो आप सोचिए इसका फिर रेडियस क्या होगा? क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा ये सवाल? इज इट एन ओपन क्वेश्चन कि देयर कैन बी वेरियस आंसर्स? हम इसमें, अगर हमारे पास टाइम होता, हम ट्रेपीजियम का निकाल सकते थे। ट्रेपीजियम का होगा तो कितना होगा, अगर हमारा ट्रायंगल है तो कितना होगा। वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स विच वी कुड हैव मेड। All right. Now we are going to move on to, okay, here's this another question. आपके पास 3 नंबर है which are in the ratio of 2:3:4. Okay. So therefore, what is this number? एक नंबर 12 है, बाकी 2 नंबर क्या हो सकते हैं? 12, 18, 24 तो नहीं होगा, because 12 will be either 2x or 3x or 4x. सोच के देखिए। इतना, यस, इट कैन बी 6, 4 and 2। वेरी गुड। और क्या हो सकता है? जो लोग 18 and 24 ले रहे हैं उनको बताइए कि आपका नंबर क्या होगा। सो इट कैन बी 3। ऑल राइट, बिकॉज यू विल टेक इट एज 2x, 3x, 4x। आपका 3 हो सकता है, आपका 6 हो सकता है, और आपका 4 हो सकता है, राइट? सो इट डिपेंड्स आप 12 को कौन सा वाला नंबर ले रहे हैं। इफ 12 इज एट 4, which means the numbers are 6, 9 and 12. If 12 is at the 3 part, 3x ke part, so it will become uh, 4, that will become 12 and 8 and 16. 12, 8 and 16. और अगर 12 आपके 2 पे है, so that is 6. 6 into 3 is 18. 18 into and 6 into 4 is 24. तो आप देखिए, इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स निकल सकते हैं, करेक्ट? So let's move on. Now we come to close-ended questions. So these questions are more focused and often require a specific answer. These types of questions should be used where there is a specific answer आपको चाहिए कि state the Pythagoras theorem. So there is a very specific answer, a very specific statement जो आपको देना है, or like what is tan square 45 degrees. Okay, so there is a specific answer to that. All right, so this is done something as when you are doing recall, when you are doing a quiz at the end of a session or anything, basically as a method of practicing recall to check retention, which means drill and practice. Now, here, this is one big challenge. Again, I will say, especially for mathematics teacher. देखिए, practice के बिना तो कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता. But the moment you talk about practice, maths practice, अच्छा आज 1 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास है, प्रैक्टिस करेंगे. कोई मुझे इमोजी डाल के दिखाएगा कि चेहरे कैसे लगते हैं बच्चों के? या वर्ड में ही लिख दीजिए कि आपने क्लास में अनाउंस किया आज 1 घंटा मैथ्स का एक्स्ट्रा क्लास होगा.
बच्चों के शक्ल कैसे हो जाते हैं। किसी का भी स्माइल। अच्छा ठीक है, मान लीजिए इसको चेंज कर देते हैं कि 1 घंटा फुटबॉल ट्रेनिंग होगा या फुटबॉल, बास्केटबॉल की ट्रेनिंग होगी। फिर बच्चे क्या हो जाएगा? Somebody wrote 440 more shock. एग्जैक्टली exactly. तब एकदम से उनका चेंज हो जाएगा। अब देखिए घंटा तो बच्चे का जा ही रहा है, पर स्पोर्ट्स के लिए खुश, आप स्पोर्ट्स बोलो, कोई म्यूजिक फंक्शन बोलो, कुछ भी, पर मैथ्स के लिए बोलो मूड ऑफ। क्यों? बिकॉज द प्रॉब्लम इज दे डू नॉट फाइंड द ड्रिल इंटरेस्टिंग। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं, कैन वी मेक अप, as we all know, practice, आपको चाहे you want to be a musician, you want to be a sports person, you want to cook well, you want to, be an athlete, you have to practice. Nothing comes without practice. जब प्रैक्टिस करना है, is there any way we can make the practice interesting? So let's have a look. ये देखिए, दिस इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन पाइलअप। ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं, इधर इसका आपको सारे ये, एंड दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरियन पाइलअप, मतलब दोनों चीजें इस्तेमाल किया है। पाइथागोरस थ्योरम भी, लाइक फर्स्ट वाला जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगा, कहीं इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री लाइक 30 डिग्री करके वैसे ऑपोजिट या एडजेसेंट साइड का वो लगा के साइन या कॉस्ट लग वो निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो आपको निकालना है विच इज द एंड रिजल्ट। अब आप देखिए, दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, डू यू थिंक चिल्ड्रन विल एंजॉय डूइंग इट? कि आपने पजल के टाइप दे दिया कि ये, मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ तो आपको फिर बेहतर दिख जाएगा। ये देखिए, ये आपको निकालना है। शुरू आपने यहां से किया, करते करते आपको जाके ये वाला निकालना है। ओके, तो आप बताइए, डू यू थिंक दे विल एंजॉय दिस? मान लीजिए ये अगर आप पेयर वर्क दे देते हैं वर्कशीट में, व्हाट डू यू फील? वुड द चिल्ड्रन एंजॉय डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग? ओके, फाइन, या आई कैन सी यस कमिंग अप। अब ये एक बार आप गिन के देखिए, इसमें आपके कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन है आप 1 2 3 4, आपके देखिए इतने सारे बच्चे ने निकाले। पर ये जब कर रहे हैं, बच्चे गिनेंगे नहीं कि मैंने कितने क्वेश्चन किए। आप सोचिए, व्हेन यू आर इन अ क्लासरूम, आप कोई क्लास वर्क या क्विज देते हो, आप 2 क्वेश्चन की जगह तीसरा लिखना शुरू हो जाते हो दिल से, मैम और कितना देना है, सर और कितने क्वेश्चन है। व्हेन यू गिव समथिंग लाइक दिस, you will not. So what happens, आप 10 रहे हो, बट वो बिना चिक चिक किए वो कर रहे हैं। ऐसे आपको 1000 फ्री में मिल जाएंगे। गूगल सर्च कीजिए, जस्ट राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन पाइलअप, और पाइथागोरियन स्टैक भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ इधर आपको, यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन जस्ट गो फॉर दैट। Pythagorean stack. I have put it there. All right, Pythagorean stack. आपको इतने सारे मिल जाएंगे इंटरनेट पे। आप उसका जस्ट डाउनलोड करके एक वर्कशीट, मतलब वही उसको प्रिंट करवा के फोटोकॉपी करवा के दे दीजिए या बच्चे को मेल कर दीजिए, जैसे भी आपके स्कूल में वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव। नाउ लुक एट दिस। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या बनाया हुआ है? सो आप क्या कर सकते हैं,
And here you know how you can be smart. The question is कि आपको ये स्ट्रिप्स जो है इसको लगाना है ठीक तरीके से. ऑलराइट, इट्स अ क्वेश्चन बट स्ट्रिप्स में काटा हुआ है, आप लिख भी सकते हैं पर इसके स्टेप्स गलत है. तो बच्चों को इसको एक स्टेप्स को ठीक से लिखना है. ऑलराइट, विच मीन्स जब इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा ये वाला आपके इधर आ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करके ये अल्टीमेटली. अब देखिए, ये करने के लिए बच्चे को ये सॉल्व करना जरूरी है. नाउ लेट मी गिव यू एन आइडिया ऑफ होमवर्क. आप इस टाइप के क्वेश्चंस और जैसे आपके ये बहुत काम आता है व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. थोड़े जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना, या आप ज्योमेट्री के राइडर्स में यूज करते हैं, बच्चों को बोलिए कोई वो चाहे देख के लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि वो एक A4 साइज पेपर या कोई बड़ा रजिस्टर का पेपर में बड़ा बड़ा मोटा मोटा लिख के लाए और एक एक स्टेप को काट ले. मतलब आप स्ट्रिप्स दे दें. अब देखिए, अगर आपका हर बच्चा भी बनाते हैं, आपको 20-30 को आधे भूल जाएंगे, आधे नहीं लाएंगे. आपके पास 20-30 ऐसे कटे हुए क्वेश्चन आ गए. आप उनको लीजिए और फिर वो बांट दीजिए उन्हीं में, जस्ट कीपिंग इन माइंड जिसने जो दिया उसको वही वापस ना मिले. हम्म? और आप मान लीजिए 2-2 या 3-3 में करवाएंगे और आप बोले कि बस आपको इसको लाइन में लगाना है, इसको ठीक उसमें लगाना है. आप सोचिए और आप कुछ ऐसे रख दीजिए कि लाइक ठीक है, जो वाला ग्रुप या जो वाला पेयर सबसे ज्यादा सॉल्व करेंगे उसको स्टार मिलेगा, या जो भी आपके स्कूल में है. आपको क्या लगते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे? बिकॉज देखिए, उनको वो कुछ लिख नहीं रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन. दे आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. एंड आप उनको बोल भी सकते हैं कि सॉल्व करके वो पेस्ट कर ले अपने नोटबुक में, जैसे भी वो आप लोग खुद टीचर्स है, आपके पास आई एम श्योर इससे भी बेटर आइडियाज है. मैं जस्ट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब ये मैं ऑफलाइन में टीचर्स के साथ करवाती हूँ, उनमें मैं इतना बच्चे जैसे बन जाते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद वो आएगा, और फटाफट करने में इट इज लाइक सॉल्विंग अ पजल. सो देयरफॉर दीज काइंड ऑफ, अब देखिए इन बातों बातों में आप देखेंगे बच्चों ने क्लास में बैठे 6-7 सम कर लिए. और कितना करवाएंगे आप अगर वैसे भी, और कैसे किया, खुशी खुशी से. अब जब खुशी खुशी से करेंगे सो नेचुरली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो जागेगा ही. ओके, सो देयरफॉर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर वेरी नेसेसरी. हमारे सारे जो क्वेश्चंस जो असेसमेंट के होते हैं, दे आर ऑल क्लोज क्वेश्चन. वी कैन नॉट पॉसिबली हैव ओपन क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स ड्यूरिंग समेटिव एग्जाम. बट close ended questions can be very boring when you are practicing. We just have to make it look coloring या ऐसे गेम्स ऐसे करके, और इसमें आपका कोई रिसोर्स कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और बच्चों से क्वेश्चन बनाइए. क्या करेंगे, आर डी शर्मा से कॉपी करके लाएंगे, कोई बात नहीं, करने दीजिए ना कॉपी. स्कूल में आके जब वो उसको तो वो क्वेश्चन नहीं करना है, दूसरा करेगा, तब तो सॉल्व करना ही है. तो इसीलिए यू कैन ट्राई इट आउट. ओके, सी अगेन दिस इज अ मेज. ऑलराइट, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये सारे आपको इतना, आप सिर्फ टॉपिक डालिए और बोलिए मैथमेटिकल मेज. ये देखिए मैंने, ये मेज है और उसका आंसर भी. तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक MCQ. बच्चा ये सॉल्व करेगा, अब किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे करते करते बच्चे को इधर पहुंचना है. ऑल राइट, इस क्वेश्चन में देखिए जैसे दो रास्ते हैं, कोई बच्चा इस रास्ते से आ सकता है, कोई बच्चा इस रास्ते से भी आ सकता है. बट आप देखिए जिस रास्ते से भी आए, बच्चे ने कितना क्वेश्चन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, सो देयरफॉर they can try out this thing. All right, so let's move on now. How can we sometimes change
close question to open question. ये भी possible है that we can have a simple question that there are 12 apples on the table, some in a basket, and there are total 50. So it's a simple, very a subtraction question कि 50 में से 12 टेबल में है तो बैग में कितने हैं. But बस इसको the way I say it, उससे मैं ये क्वेश्चन को ओपन बना सकती हूँ बाय सेइंग कि देयर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल एंड सम इन द बास्केट. टोटल 50 है. तो कितने हो सकते हैं? हो सकता है टेबल पे 49 हो और बैग के अंदर एक ही हो. It can be 27 and 23. It can be, so you can have various kind of things. So therefore, use these kind of questions as discussion जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं कि which makes a person think why is such and such an example of something. Let me give you an example. अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वन अ प्राइम नंबर, तो इसमें यस या नो आंसर है. अब किसी ने तुक्का मारा कि नो. अब आपने ठीक है, करेक्ट है, पर बच्चे ने क्यों बोला? अगर आप इंस्टेंट पूछते हैं कि वाई इज वन नॉट अ प्राइम नंबर, आपने बता दिया कि वन प्राइम नंबर नहीं है, पर अब बच्चे से आप पूछ रहे हो कि वन क्यों प्राइम नंबर नहीं है, तो अब जब बच्चा बोल आंसर देता है, बच्चे को बताना पड़ेगा द रीजन, राइट? So that is what is very important, that the child has understood the concept. ये आपको ओपन क्वेश्चंस में देखने में, इज जीरो अ रैशनल नंबर? ओके, यस नो कुछ भी. व्हाई इज जीरो नॉट अ रैशनल नंबर और नॉट एन इरेशनल नंबर? आप कुछ भी है, कभी आप गलत भी डाल सकते हो. बच्चों को ठीक करने दो. आप कभी देखना, जैसे मैंने आपको वो स्ट्रिप ऑफ क्वेश्चंस दिखाए, कभी आप कुछ क्वेश्चंस स्पेशली जिसमें ज्यादा स्टेप्स हो, मान लीजिए 4-5 स्टेप्स, आप एक वर्कशीट बना लीजिए, हर में कुछ ना कुछ गलती हो और बच्चे को दे दीजिए, बच्चों को वो एक वर्कशीट दे दीजिए कि इसमें से कौन से सही है, कौन से गलत है. गलती निकालना सबको बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो देयरफॉर आप देखेंगे सॉल्व करने के बजाय वो पढ़ के देखेंगे कि गलती कहाँ पे है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. जब आप ओपन एंडेड कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं, तो दीज आर सर्टेन थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड कि आप, बिकॉज आफ्टर ऑल वी शुड कीप इन माइंड कि हमारे पास टाइम कितना है. सो डोंट मूव अवे फ्रॉम द मैथमेटिकल फोकस. ओपन क्वेश्चन करना, आप टॉपिक सोच लीजिए, टॉपिक के हिसाब से कर सकते हैं. there should be a certain amount of ambiguity कि 2-3 तरह के आंसर हो, पर ऐसा नहीं कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो, फिर बच्चे फ्रस्ट्रेटेड बोर हो जाएंगे. एंड देन यू शुड हैव लाइक, अगर आपको लग रहा है कुछ आपके पास प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए, 2-1 क्वेश्चन जिससे बच्चे को आप रास्ता दिखा सके, जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि उनको क्लू दे सके, और कुछ की क्वेश्चन को आप आगे लाइक वन, this is something you can write down if you want. This I learned when I was doing a course, with Cambridge University. They have this lovely saying that your class should have a low threshold and a high ceiling. लो थ्रेशोल्ड की आपका जो घुसने का जो चौखट हो, वो इतना नीचा हो कि कोई भी घुस सके, कोई बच्चा उधर ना गिर जाए कि अरे ऊंचा, ये तो क्लास में घुसना ही मुश्किल है. और सीलिंग इतना ऊंचा हो कि जित कोई भी बच्चा बढ़ता जाए उसके ऊंचाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. सो दैट इज द क्वेश्चन कि आपके पास इनेबलिंग हो कि बच्चे को आप हेल्प कर सके, और थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी हो जो हाई अचीवर्स के लिए. एंड देयरफॉर नो, दैट इज व्हेन यू आर आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन. You sometimes have to give a wrong example so that child will say no, it is a rational number. So you can ask why is it a rational number. Okay, because आपको p by q फॉर्म में दिखाना है, so then the child will have to explain to you कि जीरो को p by q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. This is how, that is why I have put this question.
It is a rational number, yes, but it is a deliberate mistake there to make the children come out with the correct answer. Okay, all right. Now come the diagnostic question. Now, what are diagnostic questions? These questions are formulated in such a way that the thought process of the student answering the question टीचर को समझ आए. These can be used for probing in nature कि टीचर को समझ आए कि इधर प्रॉब्लम कहाँ पे है. So I will give you some example. All right. जैसे ये वाला है. What fraction of the shape is not shaded? And the answer has to be in the simplest form. Can you tell me? In fact, let me give you the options. You can choose from there. ये रहे आपके option. A, B, C, D. Suraj Pratap sir has got it right. Yeah, Ravi Ranjan sir ने 3/9 करके याद आया होगा कि simplest form में देना होगा या 1/3. पर देखिए इसमें आप देख सकते हैं कुछ बच्चे इसको लिख देंगे 3/6. ये 3 है वो ब्लू 6 है. ओके, इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक. आपको पता चलेगा कि बच्चे को ये वाला समझ नहीं आया कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं, होल का लेते हैं. So it is actually white is 3/9 and blue is 6/9. Okay. So therefore that is the thing. कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको अंदर वाले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 करके गलत काउंट कर लेंगे. ऑल राइट. जैसे अभी किसी ने डी लिखा है. इट कैन नॉट बी डी बिकॉज इट्स says give your form. So आप डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको कॉन्सेप्ट मालूम है बट ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा. So these are the diagnostic questions. I'll give you another example. इसमें आप बताइए आपके पास 6 फिगर्स हैं. फर्स्ट आपको हर फिगर में हाइपोटेन्यूज बताना है. फर्स्ट फिगर में कौन सा हाइपोटेन्यूज है? डायमेंशन साइड्स के दिया हुआ है. आप मुझे डायमेंशन लिख दीजिए. फर्स्ट वाले में हाइपोटेन्यूज का डायमेंशन कितना है? ओके, मधु मैम ने बोला 14. अच्छा, अगला वाला सेकंड वाले में बताइए कौन सा होगा? 15√2. ओके. अच्छा, व्हाट अबाउट मुझे बताइए फिगर 6 वाले में, सिक्स्थ फिगर, सिक्स्थ वाला फिगर में. अब आप ध्यान से देखिए आपने क्या बोला. आपने पहले वाले में बोला 14. मैंने पूछी है हाइपोटेन्यूज के बारे में. क्या ये राइट ट्रायंगल है? ये जो पहला फिगर 1 13 9 14, इज इट अ राइट ट्रायंगल? तो अगर राइट ट्रायंगल नहीं है तो हाइपोटेन्यूज कहां से आएगा? है ना चक्कर. एग्जैक्टली. राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज सिर्फ दो ही ट्रायंगल में है. एक वो ग्रीन वाला और एक वो येलो वाला. 2 and 5. ओके. पर देखिए, सो दिस इज व्हाट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स जो समझते हैं हाइपोटेन्यूज मींस द लॉन्गेस्ट साइड. बट नो, दैट्स नॉट करेक्ट. Hypotenuse is the longest side only in a right triangle. अब मान लीजिए आप इतना कुछ पढ़ा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम और उसके उसको बेस करके आप ट्रिग्नोमेट्री जा रहे हैं, कैलकुलस में जा रहे हैं. पर आप सोचिए अगर बच्चे को हाइपोटेन्यूज ही नहीं मालूम तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ओके. सो देयरफॉर दीज आर, इससे आपको ये, जैसे आप अगर क्लास के शुरू, डायग्नोस्टिक्स आर जनरली डन, आप कभी भी कर सकते हैं बट इट इज नेवर डन एट द एंड.
Okay, because diagnostic helps the teacher to learn where to help. जब आपका फाइनल एग्जाम हो रहा है या समेटिव हो रहा है, आपको और हेल्प करने का मौका नहीं है. दैट्स अ फाइनल थिंग. तो डायग्नोस्टिक हैज टू बी डन ईदर क्लास की शुरुआत में कि आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर और अ न्यू टॉपिक. फॉर दिस बच्चों को ये चीजें आना जरूरी है. Let me do a diagnostic test. Like for example, this you can start before doing, triangles in class 10. You can give a worksheet like this. So therefore, these are kind of things. जैसे polynomials शुरू करने से पहले 10th में आप उनसे पूछिए things like that. What is the degree of a zero polynomial? What is the degree of a constant polynomial? ये सब चीजों में बच्चे बहुत गलती करते हैं, and these are all diagnostic questions. Okay, moving on. Now we have analytical question, जिसमें बच्चे को डेटा दिया हुआ है. Now by data I don't mean just statistical data, various kind of things, but उसमें बच्चे को एनालाइज करके निकालना है. फॉर एग्जाम्पल, सो दीज आर व्हाट these questions can be useful for encouraging students to develop critical thinking and problem solving skills. मतलब NEP में तो ये हर जगह पे critical and creative thinking, problem solving skills, identifying pattern, relationship, ये ऐसे वाले questions आपके लिए उन बच्चों से पूछना बहुत जरूरी है. सो व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? ऑलराइट, तो इधर आपके पास आपको बता दिया गया है ये टू आइडेंटिकल मतलब कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स है. ओके, तो आपका ये जो पॉइंट है, ऑलराइट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी? आपके पास ये सारा डेटा मौजूद है. ऑलराइट, इससे आपको मिलेगा, इसको यूज करके आपको निकालना है कि डी क्या है. सो बच्चे को ये सारा स्टडी करना पड़ेगा. ओके, आप देखिए इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है. एनालिसिस ये नहीं है कि आप इतना इतना पेज भर भर के डेसिमल डाल के ये डाल के ऐसे करें, नहीं. इसमें जरूरत है समझदारी, एनालिसिस की. अब ये अगर वी अंडरस्टैंड, ये आपका है C14. ऑल राइट, सो दिस इज योर, ये आपका 1 इज x, ये इतना 1 है. ऑल राइट, और फिर ये आपका आ गया इधर, ये आ गया 6. So this is 1, this is 6, that means this is 5, right? तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा because the rectangles are congruent. That means 6 plus 5 आपका ये आ जाएगा 11. So here are your options. कौन सा वाला होगा? 11 4, correct, absolutely correct. Okay, all right. Now moving on to, आप देखिए, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. मिडिल स्कूल में 6 7 8 में शुरू होता है और जाके बच्चे बहुत समय, percentage, that percentage fraction, when you say 100%, lot of people, frankly, not even just students, बहुत adults भी सोचते हैं if I say 100% increase, वो समझते हैं 100 गुना. हैव यू मेट सच पीपल जिसको आप बोले कि 100% बढ़ गया, ओके, दे थिंक कि 100 गुना बढ़ गया. ऑल राइट, एग्जैक्टली, इट इज डबल हो गया, बट दे थिंक दैट कि 100 गुना. सो परसेंटेज में अब आप देखिए ये दे दिया है सारे बच्चे. ऑल राइट, अब बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन द मेथड्स 1 4 5 एंड 7. अब देखते हैं, चलिए 5 क्या है. ऑल राइट, या 1 4, व्हाट इज 4? फोर्थ वाला ये है. y is 25% of 60, 60 by 2, and फिर divided by 2. Why? Because 25% means एक चौथाई. तो हमने 60 को पहले हाफ कर दिया और उसके बाद हाफ कर दिया. So therefore it is 1/4 बन गया. So these are the questions, you can ask your students that ये आप कैसे कैसे. और एक चीज आप, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि
बिकॉज ऑफ ये कैसे हो सकता है 25% ऑफ 60 इज 60% ऑफ 25, 75% ऑफ 100 इज 100% ऑफ 75, मतलब ऐसे ये होता है। कैन यू आस्क व्हाई? कोई मुझे बता सकते हैं ये कैसे बन जाता है? So it becomes so actually because of the commutative property. All right. So these are the questions which are critical, creative questions. As I said, NEP में आपने देखा है, अभी NCF में भी critical and creativity things. All right. So here comes a question for you. All right. This is a question where you have to find out what generalize a formula for the areas of these squares, these tilted squares. Okay. तो पहले तो आप मुझे बता सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर? ओके, लेट्स सी। मुझे आंसर आया है 2 स्क्वायर यूनिट्स 9। एक बार करके देखते हैं। दिस इज 1 यूनिट एंड देन वी हैव 1 यूनिट। तो ये आपका साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज √2। ये √2 है। √2 अगर साइड है तो स्क्वायर का एरिया बन गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट्स। ऑलराइट, इस वाले का कितना आएगा? ये साइड है √5। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √5, एरिया आ जाएगा √5। ऑलराइट, इसका आ गया √10, सो ये आ गया 10 एंड दिस इज 17। आपका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा n² + 1। All right. So, the last question that we have for today's session, here's an interesting set of 5 numbers. All right. ये 5 नंबर के आप जरा ध्यान से देखिए, मीन, मोड, मीडियन सारे 5 है। एवरीथिंग इज 5, मीन भी 5 है, मोड भी 5 है। आप कुछ ऐसे और नंबर्स बता सकते हैं जिनके मीन, मीडियन, मोड, रेंज सारे सेम हो? आई थिंक वी आर अबाउट टू फिनिश। सो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एंड यू विल, मैं आपको दिखा दूंगी, ये आप खुद करके देखना। देखिए कितने सारे ऐसे नंबर्स निकाल सकते हैं हम। ये देखिए 2। अगर आप ये लेती है, देखिए मीन, मीडियन, मोड, रेंज सारे 2 आएंगे। ये देखिए, अगर 4 चाहिए, ये 4 है, 5 है, और सबसे बढ़िया तो ये है 0। All right. So with this, I come to the end of this session. Would you agree when I say now that good teaching is more of giving of right questions than giving right answers? Would you agree with me there? Thank you. Thank you so much. I wish I could, see you all. And also, I'll just switch on my. Thank you, ma'am, for that wonderful session. Ma'am, I think you are on mute. Oh, was I Huh. on mute?
No, only towards the end. I Now, think now. just now, yeah, probably Just just now. now by mistake. Yeah, so that was so wonderful and interesting that it took us back to our classrooms when we were Yeah. kids, and it also made us that yes, now we can improve the teaching, how we can make it interesting, and all. Hope we had such teachers during our time also. Thank you, I ma'am, think for the all of nice. us can become that. It just Yeah, needs a bit of, creativity. That's all. definitely. So for such, thank you for such wonderful session. Hope it Thank you, ma'am. continues in the next sessions also. Thank you so much. And all of you, thank you so much for being so participative. I wish that we were together offline. That as teachers, that's always much fun, but at least this gives me a chance to, meet that nearly 3,000 people out here. So thank you and goodbye. Take care. Stay happy and healthy. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Have a nice day. You too. Thank you.